দিয়া আহিছিল তেখেতে আমাৰ এই কেম্পাছটো ইনগ্ৰেট কৰি থৈ গৈছিল সেইটো আছিল 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰপিছত আজি এয়া 5 মাৰ্চত দ্বিতীয়টো অনুষ্ঠান এই কনভোকেশন অনুষ্ঠানটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটো খুব মনোগ্ৰাহী হয় আৰু ই মিনিট বাই মিনিট বন্ধা থাকে আপোনালোকৰ হাতত এই যে মোবাইলবিলাক যে আছে এটা মোবাইল এটিকেট এটা আছে অকমান সৌজন্যতামূলকভাৱে মোবাইলবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত যেতিয়া কনভোকেশনটো যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া ইয়াত আহি কোনেও মোবাইলত ফটো উঠিব নোৱাৰিব ফটো উঠাব নোৱাৰিব কনভোকেশন শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই গোটেই অঞ্চলটোত গোটেই চহৰটো যতে ততে যেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি তেনেকুৱাকৈ ফটোবিলাক ল'ব আপোনালোকৰ এই মুহূৰ্তবিলাক কেপচাৰ কৰি ৰাখিব এতিয়া এই প্ৰথম এই কথাষাৰ ক'লো মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত কি কথা পাতি আছে মাউথতে মাউথ বিটু এতিয়া আপোনালোকে প্ৰচেছন কৰি আহি সোমাল এই প্ৰচেছনটো এটা গ্ৰামাৰত বন্ধা আছিল আৰু এই প্ৰচেছনটো কৰি আহি সোমোৱাৰ পাছত ইয়াতে যিটো সিটত বহিলে এই সিটবিলাকো এটা গ্ৰামাৰত বন্ধা আছে তলত কি হৈ আছে এতিয়া এটা লাইভ ষ্ট্ৰীমিং এটা হৈ আছে আপোনালোকৰ লগত যিসকল আহিছে একম্পেনিং পাৰ্সনছ তেখেতসকলক এটা বহুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেখেতসকলে গোটেই কনভোকেশনখন তেখেতসকলে স্বচক্ষে দেখিব পাৰিব লগতে কি হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰত আমাৰ ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্য অতিথিৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় উপাচাৰ্যকে ধৰি বোৰ্ড অফ মেনেজমেণ্ট একাডেমিক কাউন্সিলৰ মেম্বাৰবিলাক ৰৈ আছে ময়ো এজন একাডেমিক কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ সেই সূত্ৰে মই এটা গাউন এটা পিন্ধিছোঁ ময়ো সেই প্ৰচেছনত আহিম আমাৰ শিডিউল মতে 10:50 চেঞ্চেলৰ মানে মাননীয় ৰাজ্যপাল আৰু চিফ গেষ্ট তলত পাব তেখেতসকলেও ডনিং কৰিব তাৰপিছত তেখেতসকলে তলৰ পৰা প্ৰচেছন কৰি আহিব লিফ্টটো আছে সিডিটো আহিব পাৰে সেইটো সময়ত কোৱা যাব ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰৰ পৰা থাৰ্ড ফ্লোৰলৈকে আহিব তাৰপিছত 11টা বজাত এই প্ৰচেছনটো এইখন গেটেদি সোমাব এইখন গেটেদি সোমাই পেলাই প্ৰচেছনটো আহি ইয়াতে নিৰ্দিষ্ট আসনবিলাকত তেখেতসকল বহিব প্ৰচেছনটো যেতিয়া আহিব মন কৰিব এইটো এটা চাবলগীয়া কথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কে প্ৰচেছনটো লিড কৰে তেখেতে এডাল দণ্ড এডাল লৈ পেলাই প্ৰচেছনটো লিড কৰে তেখেতসকল যেতিয়া আহিব ইয়াতে আমাৰ লগত যে আছে ডক্টৰ চয়নিকা সেনাপতি তেখেতে এনাউন্সমেণ্ট কৰি থাকিব প্ৰচেছনটো সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে থিয় হ'ব লাগিব প্ৰচেছনটো আহি ইয়াত তেখেতসকলে ঠিক নবহে কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰম্ভ হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ পাছতে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এনথেমটো বাজিব বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতটো বাজিব সেই গোটেইখিনি সময় আপোনালোকে থিয় হৈ থাকিব লাগিব তাৰপিছত হয় তাৰপিছত আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী আছে আপোনালোকক কোনোবাই যদি অসমীয়াত বুজাত যদি অসুবিধা পায় পাছত কৈ দিব লাগিলে কথাখিনি অকমান ইংৰাজীতো কৈ দিম বা হিন্দীতো দৰকাৰ হ'লে কৈ দিম তাৰপিছত হ'ব ফেলিচিটেশ্যন হ'ব আমাৰ ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্য অতিথিক সেইটো আমাৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ে কৰিব সেই ফেলিচিটেশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আঁত ধৰি থাকিব ডক্টৰ চয়নিকা সেনাপতি তাৰপিছত এখেতে ৰেজিষ্টাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব যে আপুনি মাননীয় ৰাজ্যপালক কওক যে কনভোকেশনখন যাতে অপেন বুলি তেখেতে ডিক্লেয়াৰ কৰে তেতিয়া অনাৰেবল চেঞ্চেলৰে ক'ব যে আই ডিক্লেয়াৰ দ্য কনভোকেশন অপেন বা আই ডিক্লেয়াৰ দ্য 6th কনভোকেশন অফ KKHSOU ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি অপেন তাৰমানে তেতিয়া কনভোকেশনখন অপেন হৈ গ'ল অপেন হৈ যোৱাৰ পাছত এখেতে আমাৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব তেখেতৰ এড্ৰেছটো দিবলৈকে উপাচাৰ্য মহোদয়ে এড্ৰেছটো দিলে এড্ৰেছটো দি উঠাৰ পাছতেই এখেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব যে আমাৰ যিসকল PhD ডিগ্ৰীধাৰী আছে যিসকলক PhD ডিগ্ৰী দিয়া যাব তেখেতসকলৰ ডিগ্ৰীটোৰ কনফাৰ্মেণ্টৰ কাৰণে এখেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব তেতিয়া আমাৰ এই PhD ডিগ্ৰীধাৰী যিসকল আছে তেখেতসকলে কথাখিনি মন কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ পালটো আহিল প্ৰথম কি হ'ল চেঞ্চেলৰে ক'লে আই ডিক্লেয়াৰ দ্য কনভোকেশন অপেন
তাৰপিছত তেখেতে এংকৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে চেঞ্চেলৰক ৱেলকাম এড্ৰেছ দিবলৈকে চেঞ্চেলৰৰ ৱেলকাম এড্ৰেছ দিয়া হৈ গ'ল ৱেলকাম এড্ৰেছ দিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতেই এখেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব যে আমাৰ PhD ডিগ্ৰীবিলাক কনফাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰে আহি পেলাই আপোনালোকক ক'ব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চিটত যি নাম আছে সেই অনুযায়ী নিশ্চয় বহিছে আপোনালোকক ক'ব I urge upon the candidates for the degree of Doctor of Philosophy to rise in their seats. এই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোক উঠি দিব অনুগ্ৰহ কৰি উঠি দিয়কচোন যেনিবা ময়ে ক'লোঁ আপোনালোক উঠিয়ে থাকিব বহি নিদিব আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ যেতিয়া ক'ব I urge the candidates for the degree of Doctor of Philosophy to rise in their seats. আপোনালোক উঠি থাকিল আপোনালোকক উদ্দেশ্য কৰি ভাইচ চেঞ্চেলৰে চেঞ্চেলৰক ক'ব Sir, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy, to which I pray that they may now be admitted. তেতিয়া চেঞ্চেলৰে তেখেতৰ নিজৰ চকীৰ পৰা ক'ব By virtue of the power vested in me as the Chancellor of Krishnakanta Handicap State Open University, I admit you to the degrees of Doctor of Philosophy, and I charge you that ever in your life and conversation you show yourselves worthy of the same. আপোনালোকে এই দীক্ষাটো ল'লে চেঞ্চেলৰে আপোনালোকক এৱাৰ্ড কৰিলে আপোনালোক থিয় হৈ থাকিব তাৰ পাছত আমাৰ ৰেজিষ্টাৰে ক'ব মানে এখেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব ৰেজিষ্টাৰক তেতিয়া ৰেজিষ্টাৰে ক'ব the candidates as announced are requested to come one by one and receive the degrees of Doctor of Philosophy from the Honorable Chancellor of the University. লগে লগে আপোনালোকে ক্ষিপ্ৰভাৱে আহি পেলাই এনেকুৱাকৈ আহিব ইফালেদি আহিবতো ইয়ালৈকে লগে লগে আহি যাব আপোনালোক এতিয়া অকণমান অৰ্ডাৰটো চাই লওঁ 1 নম্বৰত মৌচুমী গগৈ প্ৰথমতে আপুনি লিড কৰিব ইন্দ্ৰমোহন হাজৰিকা পাপৰি ডেকা ছবিদানী দাস যতীন মেছ মণিকংকনা বৰ্মন সুমি বৰা নাই আচ্ছা এইটো আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ লগত ঠিক কৰি বিস্মিতা দেৱী বৰষা কলিতা কৃষ্ণাংগী শইকীয়া তাৰপিছত দীপাঞ্জলি বৰ্মন আৰু শিখাৰাণী বৈশ্য এতিয়া চেঞ্চেলৰে যেতিয়া কৈ থাকিব that by virtue of the power vested in me as the Chancellor of Krishnakanta Handicap State Open University, right? So yourselves worthy of the same. Worthy of the same বুলি তেখেতে যেতিয়া এনাউন্স কৰিলে লগে লগে মৌচুমী গগৈ গোটেই কেইজন ওলাই আহিব ৰেজিষ্টাৰে ক'ব টাইম বাচিব আপোনালোক ওলাই আহিব আহকচোন বাৰু আপোনালোক মই ক'লোঁ চেঞ্চেলৰ হিচাপত I award you the degrees. এতিয়া তৎক্ষণাত আহক আহি দেখাত ভাল দেখাৰ কাৰণে মৌচুমী গগৈ আহি ঠিক ইয়াতে থিয় দিব খৰত আহিব আৰু বেছি হেৰি নকৰিব শৃংখলাৰ মাজেৰে তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰে নাম মাতিলে মৌচুমী গগৈ আহিল ইফালেদি আহিল আহক আপুনি অহাৰ লগে লগে কি হ'ব ইফালৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট আৰু মেডেল লৈ আহিব বা যিটো ভাইচ চেঞ্চেলৰ থাকিব চেঞ্চেলৰে এৱাৰ্ড কৰিব এখেতসকল দুগৰাকী ইয়ালৈকে আহি যাব আপোনাক ইয়াতে চাৰ্টিফিকেটখন দিব দিওঁতে চাৰ্টিফিকেটখন মৰ্যাদা সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিব মৰ্যাদা সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি কি ইয়াতে ফটো ল'ব অকণমান সময় পজ দিব এইখিনিতে যাতে কোনো কিবা পূজাৰ অসুবিধা আছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি দিব অৰ্গেনাইজ কৰি দিব টাইমটো যাতে হেৰি নহয় আপোনালোক নিজৰ নিজৰ ঠাইত বহক আকৌ দ্বিতীয়বাৰটো এইটো ৰিহাৰ্চেল কৰিব নালাগে আচ্ছা এনেকুৱাকৈ PhD ডিগ্ৰীখিনি প্ৰদান কৰা হ'ল প্ৰদান কৰা হোৱাৰ পিছত
আমাৰ আকৌ কিছুমান এমফিল ডিগ্ৰী কিছুমানো আছে PhD ডিগ্ৰী কেইগৰাকীমান এবচেণ্টটো আছে তেখেতসকলক ইন এবচেঞ্চিয়া ডিগ্ৰীটো প্ৰদান কৰা হ'ব তাতে আকৌ এখেতসকল বহিলে তেতিয়া আকৌ ৰেজিষ্টাৰে আকৌ চেঞ্চেলৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব Sir, on behalf of the candidates who have been examined and found qualified to the degree of Doctor of Philosophy and degree of Master of Philosophy, who could not attend but have been permitted to receive their degrees in absentia, I pray that they may be admitted. তেতিয়া চেঞ্চেলৰে তেখেতসকলক এডমিট কৰিব আকৌ এতিয়া আহিল আমাৰ লাৰ্জাৰ যিটো পাৰ্ট আছে আমাৰ ডিগ্ৰীধাৰীসকলৰ মাজত প্ৰথম PhD হল এমফিল হল এইবাৰ দিয়া হ'ব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীখিনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীখিনিত কি হ'ব PhD আৰু এমফিলক দিছিলে ভাইচ চেঞ্চেলৰে প্ৰপ'জ কৰিছিল চেঞ্চেলৰে এৱাৰ্ড কৰিছিল কিন্তু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীখিনি প্ৰপ'জ কৰিব দিনে একেতে ডক্টৰ সেনাপতি এনাউন্স কৰিব তেখেতে এনাউন্স কৰি প্লাই ক'ব যে ডিন একাডেমিক প্লিজ কাম এণ্ড এডমিনিষ্টাৰ দ্য প্ৰচেছ তেতিয়া ডিন একাডেমিক আহিব আহি প্লাই ক'ব I urge upon the candidates for the degrees of Master of Assamese, Master of Business Administration, Master of Assamese আছেনে হাত ডাঙক নহয় গ্ৰেজুৱেশ্যন নহয় পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন প্ৰথম পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন নহয় Master of Business Administration গোল্ড মেডেলিষ্টখিনিও আছে ঠিক আছে Master of Commerce Master of Economics, Master of Education, Master of Journalism and Mass Communication, Journalism and Mass Communication, Political Science, Sociology, Social Work, Master of Social Work, MSW, MSc in IT, আচ্ছা আপোনালোকে হাত দাঙিব নালাগে মই অকমান যা চাই লৈছিলোঁ কোনবাটো প্ৰগ্ৰেমত নাই নেকি মই আকৌ ৰিপিট কৰোঁ এখেতে যেতিয়া ডিন একাডেমিকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে তেতিয়া ডিন একাডেমিক আহিব আহি ক'ব I urge upon the candidates for the degrees of Master of Assamese, Master of Business Administration, Master of Commerce, Master of Computer Application, Master of Economics, Master of Education, Master of English, Master of Journalism and Mass Communication, Master of Political Science, Master of Sociology, Master of Social Work, and Master of Science in Information Technology to please stand up. উঠি দিব আৰু এই উঠি দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটোত এজন উঠিলে এজনক দেখি পেলাই পাঁচজনে উঠিলে এনেকুৱা নহয় যেতিয়া ডিন একাডেমিকে আহি পেলাই ক'ব মানে এটা শোভনীয় হ'ব লাগিব আমাৰ অডিয়েন্সৰ গোটেইবিলাকৰ বিহেভিয়াৰটো যেতিয়া এখেতে ক'ব টু প্লিজ ষ্টেণ্ড আপ লগে লগে উঠি দিয়ক মই লাগিলে আকৌ এবাৰ কম বহক অনুগ্ৰহ কৰি বহক মই লাগিলে আকৌ এবাৰ কম যেনিবা মই একাডেমিক দিন মই আপোনালোকক মই মানে এতিয়া মই প্ৰথম আপোনালোকক ৰেডি কৰাই ল'ম তাৰপিছতহে মই ৰাজ্যপালক প্ৰপ'জ কৰিম আপোনালোকক ৰেডি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মই কৰি আছোঁ I urge upon the candidates for the degrees of ... to please stand up সুন্দৰ আপোনালোক থিয় হৈ থাকিব আপোনালোক থিয় হৈ থাকোঁতে ডিন একাডেমিকে চেঞ্চেলৰক প্ৰপ'জ কৰিব Sir, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for the degrees of Master of Assamese, Master of Business Administration, Master of Commerce, Master of Computer Application, Master of Sociology, Master of Social Work, Master of Science in Information Technology, to which I pray they may now be admitted. তেতিয়া চেঞ্চেলৰে ক'ব আপোনালোকক উদ্দেশ্য কৰি By virtue of the power vested in me as the Chancellor of Krishnakanta Hendrik State Open University, I admit you to the degrees of Master of Assamese, this. And I charge you that ever in your life and conversation, you show yourselves worthy of the same. তাৰ পিছত তেতিয়া ডিন একাডেমিকে আপোনালোকক ক'ব the candidates may please sit down. লগে লগে বহি দিব আকৌ এবাৰ কৰিব লাগিব এইটো ৰিহাৰ্চল ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিল আমাৰ ইউজি ডিগ্ৰীখিনিৰ কাৰণে একেখিনি প্ৰচেছ এংকৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব ডিন একাডেমিকক তাৰপিছত ডিন একাডেমিকে ক'ব আপোনালোকক আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটখিনিক I urge upon the candidates of bachelor degrees both pass and major in Assamese,
business administration, commerce, computer application, economics, education, English, history, journalism and mass communication, philosophy, political science, Sanskrit, sociology, and social work to please stand up. সুন্দৰ আৰু অকমান খৰচ কৰিব টু প্লিজ ষ্টেণ্ড আপ বুলি কোৱাৰ লগে যিখিনি আমাক লাগে আৰু 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড উঠি দিব লগে লগে আপোনালোক হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকক প্ৰেজেন্ট কৰিব চেঞ্চেলৰৰ ওচৰত আই প্ৰেজেন্ট টু ইউ দ্য কেণ্ডিডেটছ হু হেভ বিন এক্সামাইন্ড এণ্ড ফাউণ্ড কোৱালিফাইড ফৰ দ্য আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীজ দিছ টু হুইচ আই প্ৰে দ্যাট দে নাও বি এডমিটেড তেতিয়া আকৌ চেঞ্চেলৰে আপোনালোকক এডমিট কৰাব বাই ভাৰ্চু অফ দ্য পাৱাৰ ৰাইট so that you can, I charge you that ever in your life and conversation you show yourselves worthy of the same. Teacher Dean Academic Kobo, the candidates may please sit down. Loge bohi dibo. Acha. Take 3 minutes. Tar pisot ako eta koa process kisman goi thakibo. Goi thakar pasot apnalokor hekot ahibo gold medal aru certificate or karone. আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জায়গাবিলাকত বহিছে প্ৰথম মাতিব অনিৰ্বাণ সেন আৰু সুদীপ্ত দে আছেনে অনিৰ্বাণ সেন সুদীপ্ত দে ঠিক আছে এই যেতিয়াই মাতিব ৰেজিষ্টাৰে আই কল আপন দ্য কেণ্ডিডেটছ ফাউণ্ড এলিজিবল ফৰ দ্য এৱাৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি গোল্ড মেডেলছ ইন ভেৰিয়াছ একাডেমিক প্ৰগ্ৰেমছ অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি টু কাম আপ টু দ্য ডায়াছ এণ্ড ৰিচিভ দিয়াৰ মেডেলছ ফ্ৰম দ্য অনাৰেবল চেঞ্চেলৰ এই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে লাইন লাগি যাব এনেকুৱাকে আহি যাব এই PhD ডিগ্ৰী সকল যেনেকুৱাকে লাইনত আহি গল তেনেকুৱাকে প্ৰথম ইউজি বিলাক লাইনত আহি যাব প্ৰথম লাইনত আহিব অনিৰ্বাণ সেন সুদীপ্ত দে বৰ্ণালী শৰ্মা গীতাৰ্থী গোস্বামী আছেনে এনেকুৱাকে তৎক্ষণাত আহি যাব আমি আৰু কাৰণ টাইমৰ অকমান হেৰি এটা আছে কিবা জেনেৰেটৰ অন কৰিব গতিকে তেনেকুৱাকে আপোনালোকে গোল্ড মেডেলিষ্টখিনি আহি যাব আহি ইয়াতে মেডেলটো ল'ব সার্টিফিকেটখন লব মেডেলটোৰ কিবা বাকচ এটা আছে বাকচটো বাহিৰত দিব ইয়াত দিবলৈকে অসুবিধা হেতু বাহিৰত দিব আৰু দিউতে মৰ্যাদা সহকাৰে লব সম্ভ্ৰম সহকাৰে লব ফটো এখন লব এটা অনুষ্ঠানটোৰ মৰ্যাদাটো ৰাখি প্লাই আপোনালোকে সার্টিফিকেটখন আৰু মেডেলটো গ্ৰহণ কৰিব তাৰ পিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গোল্ড মেডেলিষ্টখিনিক মাতিব তাৰ পিছত সিনিয়ৰ মোষ্ট লাৰ্নাৰ দুগৰাকী আছে তেখেতসকলক মাতিব তাৰ পিছত আমাৰ জেল ইনমেট এগৰাকী আছে তেখেতসকলক মাতিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ জাস্ট বাকি অনুষ্ঠানটো বাকি বিলাকে চাই থাকক আপোনালোকক আটাইকে শুভেচ্ছা জনাইছো এটা সুন্দৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ যি এটা তাৰ মাধুৰ্য আছে তাৰ যি এটা গৰিমা আছে সেইটো অতুত ৰাখি পেলাই আমাৰ ষষ্ঠ সমাৱৰ্তনখন বৰ ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যাওক তে আপোনালোক আটাইকে শুভেচ্ছা জনাই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ মই এখন এৰিলো হ'ব থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার লাৰ্নাৰ্ছবোৰক ৰিকুৱেষ্ট আছে তেওঁলোকে যেন ৱাশৰুম যদি যায় এতিয়াই গৈ লওক আমাৰ একাডেমিক প্ৰচেছন ষ্টাৰ্ট হ'লে যাব নোৱাৰিব একাডেমিক প্ৰচেছন আফটাৰ 5 মিনিটছ ফৰ্ম হ'বই মানে বাহিৰত আৰু আহিবই গোটেইবোৰে একেলগে নাযাব প্লিজ বি সিটেড গোটেইবোৰে একেলগে নাযাব বাহিৰত যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে থাকি যায় কিন্তু আকৌ সোমাব নোৱাৰিব প্ৰচেছন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত নোৱাৰিব সোমাব
গোটেইবোৰে একেলগে প্লিজ নাযাব আপোনালোকে নিজৰ সিটত এতিয়া প্লিজ বহক ইন্দ্ৰাণী বা এইখন দৰ্জা খুলি হেৰি নকৰিব ওপেন নকৰিব প্ৰচেছন ষ্টাৰ্ট হ'লে সোমাব নোৱাৰিব তেওঁলোক আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোবাইল ফোনবোৰ ছুইচ অফ কৰি থ'ব নহ'লে ফ্লাইট মোড নহ'লে চাইলেণ্ট মোড আৰু আপোনালোকে ফ্লাছটো প্লিজ ইউজ নকৰিব ফ্লাছটো ইউজ কৰিলে মানে অসুবিধা হ'ব পাৰে প্ৰগ্ৰেমটোত প্লিজ ফ্লেছ ইউজ নকৰিব আমাৰ প্ৰচেছনৰ এতিয়া ফৰ্ম হ'ব লাইন আপটো বাহিৰত প্লিজ আপোনালোকে বহক 2 মিনিটত আহক সোমাব নোৱাৰিব কিন্তু আপোনালোকে প্লিজ বহক
আমাৰ কেমেৰা যিকেইটা আছে তাৰ সন্মুখত প্লিজ থিয় নহ'ব। আমাৰ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট কেইজনৰ মই নাম একবাৰ মাতি দিম, আপোনালোকে জাষ্ট হেণ্ড ৰেইজ কৰিব। অনিৰ্বাণ সেন, সুদীপ্ত দে, বৰ্ণালী শৰ্মা, গীতাৰ্থী গোস্বামী, মৌচুমী কলিতা নাই চাগে, স্বাস্তিক দে, সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ৰাজবংশী, জিন্তু গগৈ, সুশান্ত মণ্ডল, ৰোহন দে নাই, ৰিজুনা আক্তাৰ, সংগীতা পাটোৱাৰী, मनोवारा बेगम, एम ए हलो ओ हिपिना अच्छा संगीता पाटवारी तो नाई मनोवारा बेगम अच्छा वर्षा ठाकुरिया आदित्य कुमार শিৱা মহন্ত তিলক চন্দ্ৰ দাস গুলশন বেগম ফৰিনা মনোজ হৃদয় জ্যোতি সালেহা সংগীতা সোহেল আলী পল্লৱী বৰা আৰিফ আলী বিজয় বৰ্মন হেমচন্দ্ৰ মৰাণ হ'ল আৰু সিনিয়ৰ মোষ্ট চন্দ্ৰপ্ৰভা মহন্ত তেওঁতো আছে মহেন্দ্ৰ ভূঞা আহিছে তাৰপিছত জেইল ইনমেট আমাৰ আহিছে চাগে দুদুল দাস হয় কোনবা এটা গৰি যাব পাৰিব নেকি আহিছে আহকচোন ইয়াতে এই এজন আহা নাই বুলি ক'লে যে কোন ৰাজবংশী আহা নাই ন ৰাজবংশী কাটি দিওঁ এতিয়ালৈকে আহা নাই যদি লাগে মই কৈ দিম এই হা দুদুল এই জেল সেইটো নাই কিয় এয়া বহি আছে কোনটো না বুজিছে সেইটো ওপৰলৈ উঠাবা নাই নুঠে ন নুঠে কিন্তু নাই উঠাব চাগে এজনে আহিছে আপুনি দুদুল দাস
There is an announcement. Following the convocation and the distribution of the certificates, we invite all the learners assemble once again in this hall for an alumni meet at 2:30.
Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed invitees, friends from the media, and graduating learners of the university. It gives me immense pleasure to welcome you all to the 6th convocation of Krishna Kanto Hondigoi State Open University. So this is a much awaited event in every student's or learner's life, as it gives the returns to effort put in by them throughout their academic endeavor. So again, I would like to request all present here to kindly switch off their mobile phone or keep it in silent mode. May I request all present here to kindly rise as the academic procession is entering the hall, and to remain standing until the members of the academic procession take their respective seats, which will be followed by the national anthem and the university anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिमालय
পৰিধি ভাঙি বৈ গ'ল তীব্ৰ আলোক ধাৰা Gentlemen, you may please be seated. I would like to request the Honorable Vice Chancellor of our university, Professor Rajendra Prasad Das, to felicitate His Excellency, Honorable Governor of Assam, and the Chancellor of the University, Shri Gulab Chand Kataria, with a fulam gamusa, a bouquet, and a memento on behalf of the university. Thank you so much, sir. Again, I would like to request the Honorable Vice Chancellor, sir, to felicitate today's chief guest, Professor Shushma Yadav, with a fulam gamusa, a bouquet, and a memento on behalf of the university. Thank you so much. May I now invite the Registrar to request the Honorable Chancellor to declare the 6th convocation open. I request the Honorable Chancellor to declare the convocation open. I declare the 6th convocation open. May I now invite the Honorable Vice Chancellor to present his welcome address. मेरा सभी को नमस्कार. Esteemed Honorable Governor of Assam and Chancellor of Krishna Kanthandik State Open University, Sri Gulab Chand Kataria ji, esteemed Chief Guest,
Professor Sushma Yadavji, Pro Vice Chancellor, Central University of Haryana, former member of University Grant Commission, former Vice Chancellor BPS Mahila Vishwavidyalaya Haryana, esteemed member of Board of Management and Academic Council, recipients of degrees, diplomas and certificates, distinguished invited guests, respected former Vice Chancellors of our university, present Vice Chancellors of other universities, and our faculty members, officers and staff. Dearest learners, principals and coordinators of study centers, members from media, ladies and gentlemen, I, on behalf of the university, on behalf of all the stakeholders, and on my own behalf, like to extend you all a very warm welcome to the 6th convocation of our university. It is indeed a matter of great privilege and honor for us to have your gracious presence in this 6th convocation of Krishnakant Handike State Open University. In this convocation, we are going to award 10,880 degrees, diplomas and certificates to our learners, in which 49% are women. Let me at the outset congratulate all the successful learners who are physically present and the rest who will receive their degrees, diplomas and certificate in absentia. Today, 435 learners are physically present. Out of them, 13 will receive their PhD degrees. The rest will receive their PG, UG and diploma certificates. We are also going to award 28 gold medals in this convocation. Interestingly, while one of the oldest lady learner, who is of 75 years old, she has to receive her graduation degree. Another learner, male, is of 72 years old. He will receive his postgraduate degree. This befits our mission of openness and education beyond barrier. In fact, the university stands for equity, justice, and democratization of higher education, particularly among the disadvantaged and marginalized section of society. We are striving hard to create an environment for lifelong learning and knowledge creation to build a knowledge society. Dearest learners, this is a moment of great joy and satisfaction in your lives. This marks the completion of one stage in your life and another is about to begin. I am sure that the education, training and knowledge you have acquired will enable you to face the future opportunities and challenges with confidence. It is also a great day in the lives of your parents. With your achievement, they will feel very happy and satisfied and fulfilled. In fact, the occasion of convocation evokes a sense of success and fulfillment the university is committed to. This is not only an occasion to remember, but also a cherished moment for all of us. This occasion also gives us a reason to look back to assess what has been achieved by the university and also to look forward. Honorable Sir and Madam, the 6th convocation of the university is being held at a moment when the university is poised to make giant strides towards achieving excellence in diverse areas. Our university is the only state open university in the entire Northeast. It is the 14th open university of the country. It was established by the government of Assam by an act of state legislature in the year 2005. It was dedicated and named after a great Indologist, legendary Sanskrit scholar, and an illustrious son of the state, Professor Krishnakant Handike ji, who made pursuit of knowledge the main goal of his life. I take this opportunity to pay our rich tribute to the great soul on this occasion. It gives me immense pleasure to recollect that our university was conferred the prestigious Award of Excellence in Open and Distance Learning by Commonwealth of Learning, Vancouver, Canada in 2013 for extending the benefit of education in this part of Bharat. In fact, the vision and mission of our university since its inception is to reach the unreached
and to provide quality higher education at an affordable cost. In fact, we are deeply committed towards creating an environment for lifelong learning and knowledge creation. I am also very happy to share with the August gathering that 53% of master's degree learners of our university are female. We could succeed in motivating them to enroll in the master's degree program of the university during the last 5 years. It is indeed a very remarkable achievement for the university in disseminating higher educational opportunity to the women of the state. We are also deeply committed to it and now making no stone unturned to fulfill our vision and mission. Today, open and distance learning is widely accepted for providing freedom, flexibility, and equitable access to higher education across the whole world. UGC in 2020 declared that there is no difference between the degree of open and distance education and conventional degree. Government of India is now giving due emphasis on the expansion of higher education through ODL and online mode to achieve 50% gross enrollment ratio by 2035. Though we are a small and relatively young, but our university is committed towards its social responsibility. We are providing free education to jail inmates in all 30 district jails in the state. Divyangjan and transgender learners. The university also provides learning material to the visually challenged learners in Braille and audio format free of cost. Moreover, as a part of our social responsibility, we have also adopted 5 villages for promotion of education among the youth of those villages in the name of Mother Teresa Social Welfare Mission. Now, we are planning to adopt 5 more villages in different parts of the state through our regional and study centers. Our university has started playing a key role in the state to contribute substantially towards improving the existing GR level of the state. We are proud to inform you that our university was the first open university in the country to introduce 4-year UG programs from July 2023 session. In the past 1 year, we have added around 30 new study centers, and our total study center is going to touch 300. We have completely prepared to start 3 more self-financed regional centers to intensively spread across the state to increase the enrollment. In this academic session, through our planned effort, especially by using various social media platforms, our admission figure has crossed more than 35,000. In the past 1 year, we could enroll more than 76,000 learners. This is the first time highest in the history of our university. Our university is going to launch about 5 new PG programs in history, philosophy, mathematics, Hindi, and Sanskrit. We are also planning to start BLEAP from the next academic session 2024-25. All the academic programs that have been proposed so far are in the line with NEP 2020. In case these new programs will be approved by University Grant Commission in March 2024, we will have 16 PG programs, 11 UG programs, 8 certificate programs, and 13 diploma programs. Altogether, with 48 programs, we are preparing annually to increase our enrollment to 50,000 from the next academic session. Our university has entered in the domain of online education, and we are hopeful from January 2025, we start online UG and PG and other programs through the Center for Online Education. Our university faculty members have already developed 8 MOOCs programs for SWAYAM platform. All these courses are getting massive popularities nationally at SWAYAM. We have adopted UGC recommended model framework for UG and PG programs. Over the years, the university has emphasized carrying out quality research in diverse fields. Besides encouraging the present junior research fellows, the university has instituted need-based scholarship in the PhD programs to attract good research scholars. Over the years, our learners' profile has improved considerably.
I am happy to inform that quite a few of our learners have successfully qualified in competitive examination, including the state civil service examinations. We are going to install a full-size bronze statue of the noted Indologist Krishnakant Handikji, spending 33.5 lakh rupees, which is fully sponsored by State Bank of India. It will be installed by April 2024 in this campus. In order to obtain UGC 12B recognition, we are going to lay foundation stone for the residence of Vice Chancellor, Registrar, teachers, officers, and non-teaching staff with a guest house and a hostel in the main campus at Rani. I am happy to share with the August gathering that on 5th February 2024, the Honorable Chief Minister of Assam has given us 20 crore rupees for this project. Now all the formalities are in the process of completion. We are now conscious and concerned about quality with our growing quantity. So our effort in this direction is smooth and fair conduct of examination. A series of steps have been taken for evaluation and declaration of result in time. All these efforts will rebuild the image of our university in the entire northeastern region and the country as a whole. I am confident that with the continuous cooperation and support of all the stakeholders, including the state government, the vision and mission of the university to reach the unreached with a quality and quantity, and our dream to be one of the largest and best state open university in the country will be achieved with the passage of time. With the strong determination, dedication, and hard work of our young and dynamic pool of academicians, officers, and employees, I am sure this university shall emerge as one of the finest open universities in the country. It will emerge as a center of excellence in open and distance learning. We are determined to substantially contribute to GR, employment generation, and capacity building of youth in this fast developing state. Before winding up, I once again congratulate all the learners of the university who will be awarded their degrees today. I wish from the core of my heart that each one of you will shine in your own chosen field and make yourself as the university proud and in the days to come. My sincere gratitude to Honorable Chancellor of our university, Sri Gulab Chand Kataria ji, and Chief Guest Professor Sushma Yadav ji for your benign presence to bless us on this occasion. Jai Hind, Jai Ai Aham. Thank you. Thank you so much, sir. Now, we are going to confer the PhD degrees. May I request the Honorable Vice Chancellor to present the candidates for conferment of the degrees of Doctor of Philosophy to the Honorable Chancellor. I urge upon the candidates for the degrees of Doctor of Philosophy to rise in their seats. Sir, I present you the candidates who have been examined and found qualified for the degrees of Doctor of Philosophy, to which I pray that they may now be admitted. The power vested in me as the Chancellor of the Krishnakant Handik State Open University, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy, and I charge you that you ever in your life and conversion you show yourself worthy of the same. May I now invite the registrar to announce the names of the PhD holders and request him to kindly assist the Honorable Chancellor. The candidates, as announced, are requested to come one by one and receive the degrees of Doctor of Philosophy from the Honorable Chancellor of the University, Sri Mousomi Gogoi.
Mosumi Gogoi, Indra Mohan Hazorika, Papori Deka, Sobirani Das, Jotin Mes, Monikankana Burman, Bismita Devi, Borja Kulita, Krishangi Hoikia, Dipanjali Burman, Shikharani Bosho, thank you. Thank you so much. May I now invite the Registrar to request the Honorable Chancellor to admit all other candidates for degree of Doctor of Philosophy and Master of Philosophy in absentia. Sir, on behalf of the candidates who have been examined and found qualified for the degrees of Doctor of Philosophy and degrees of Master of Philosophy who could not attend but have been permitted to receive their degrees in absentia, I pray that they may be admitted to the degrees. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of Krishnakanta and Diki State Open University, I admit such candidate to the degree of the Doctors of Philosophy and Master of Philosophy in absentia. Thank you, sir. Now we are going to confer the postgraduate degrees of various academic programs. May I request the Dean Academic to present the candidates for conferment of postgraduate degrees of various academic programs to the Honorable Chancellor. I urge upon the candidates for the degrees of Master of Assamese, Master of Business Administration, Master of Commerce, Master of Computer Application, Master of Economics, Master of Education, Master of English, Master of Journalism and Mass Communication, Master of Political Science, Master of Sociology, Master of Social Work, and Master of Science in Information Technology to please stand up.
Sir, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for the degrees of Master of Assamese, Master of Business Administration, Master of Commerce, Master of Computer Application, Master of Economics, Master of Education, Master of English, Master of Journalism and Mass Communication, Master of Political Science, Master of Sociology, Master of Social Work, and Master of Science in Information Technology, to which I pray that they may now be admitted. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of Krishnakant Handik State Open University, I admit you to the degree of Master of Assamese, Master of Business Administration, Master of Commerce, Master of Computer Application, Master of Economics, Master of Education, Master of English, Master of Journalism and Mass Communication, Master of Political Science, Master of Sociology, Master of Social Work, and Master of Science in Information Technology, and I charge you that ever in your life and conversion you show yourself worthy to the same. The candidates may please sit down. Now we are going to confer the bachelor degrees, both pass and major of various disciplines. May I request the Dean Academic to present the candidates for conferment of the bachelor degrees, both pass and major of various disciplines, to the Honorable Chancellor. I urge upon the candidates of bachelor degrees, both pass and major, in Assamese, Business Administration, Commerce, Computer Application, Economics, Education, English, History, Journalism and Mass Communication, Philosophy, Political Science, Sanskrit, Sociology, and Social Work, to please stand up. Sir, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for the undergraduate degrees, both pass and major, in Assamese, Business Administration, Commerce, Computer Application, Economics, Education, English, History, Journalism and Mass Communication, Philosophy, Political Science, Sanskrit, Sociology, and Social Work, to which I pray that they may now be admitted. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of Krishnakant Handik State Open University, I admit such candidate to the upgradation degrees, both pass and major in mention, and I charge you that ever in your life and conversion you show yourself worthy of same. The candidates may please sit down. Thank you so much. May I now invite the Registrar to request the Honorable Chancellor to admit all other candidates for the postgraduate degrees, undergraduate degrees, postgraduate diplomas in absentia. Sir, on behalf of the other candidates who have been examined and found qualified for the degrees of Master of Assamese, Master of Business Administration, Master of Commerce, Master of Computer Application, Master of Economics, Master of Education, Master of English, Master of Journalism and Mass Communication, Master of Political Science, Master of Sociology, Master of Social Work, and Master of Science in Information Technology, and undergraduate degrees, both pass and major, in Assamese,
business administration, commerce, computer application, economics, education, English, history, journalism and mass communication, philosophy, political science, Sanskrit, sociology, and social work, and postgraduate diplomas in business management, computer application, human resource management, mass communication, and yoga, but could not attend and have been permitted to receive their degrees and diplomas in absentia, I pray that they may now be admitted. Sir. By virtue of the power vested in me, as the Chancellor of Krishnakant Pandit State Open University, I admit such candidates to the postgraduate degrees, undergraduate degrees, and postgraduate diploma, and mention in absentia, and I charge you that ever in your life and conversion you show yourself worthy of the same. Thank you, sir. May I now invite the registrar to announce the awards of gold medals of the academic programs of the university and the certificates for the senior most learners and jail inmates. I request the registrar of the university to kindly assist the Honorable Chancellor. The candidates are requested to proceed to the dais one by one as announced and receive the medals. I call upon the candidates found eligible for the award of the university gold medals in various academic programs of the university to come up to the dais and receive their medals from our Honorable Chancellor. BA Examination General Anirban Sen 2022 batch. Sudipto Day 2023 batch. Anirban Sen 2022 batch. Sudipto Day 2023 batch. Then BA examination among all honors, Barnali Sharma 2022 batch. Barnali Sharma. Gitarthi Goswami 2023 batch. Then BCom examination, Swastik Day 2023 batch. Then BBA examination, Zintu Gogoi 2023 batch. Then BCA examination, Sushanta Mandal 2022 batch. Sushanta Mandal. BSW examination, Rizuna Akhtar 2023 batch.
Then best postgraduates for the year 2022, the candidates who secured the first position in order of merit and fulfilled all other conditions in the postgraduate examinations 2022 and 23 and hence qualified for the award of University Gold Medal are MA in Assamese Monwara Begum 2023. University Gold Medal in MA in Assamese Monwara Begum 2023 batch. MA in English Borokha Thakuria 2022. Borokha Thakuria. Aditya Kumar Borua 2023 batch. Aditya Kumar Borua 2023 batch. University Gold Medal in MA in Political Science Shiva Mahanta 2022 batch. Shiva Mahanta. Tilak Chandra Das 2023 batch. University Gold Medal in MA in Political Science for 2023 batch. Tilak Chandra Das. MA in Sociology Gulshan Begum 2022 batch. University Gold Medal in MA in Sociology. Then Farhina Hussain 2023 batch. MA in Economics, Manoj Burman, 2022 batch. University Gold Medal in MA in Economics, 2022 batch, Manoj Burman, followed by Hridoy Jyoti Das, 2023 batch. Hridoy Jyoti Das. Then University Gold Medal in MA in Education, Saleha Begum Barbhuya, 2022 batch. Sangeeta Borua, 2023 batch. University Gold Medal in MBA for 22 batch, Sohel Ali Ahmed, 2022 batch. University Gold Medal for MCOM, Pallavi Bora, 2022 batch. Pallavi Bora. University Gold Medal for MCOM, Arif Ali, 2023 batch. Then
University Gold Medal MSc IT Bijoy Bormon for 2022 batch. Hemchandra Moran for 2023 batch. University Gold Medal in MSc IT for 2023 batch, Hemchandra Moran. Next, senior most learner passed out in 2022 and 23. The university would like to invite the senior most learners amongst the female and male learners passed out in last 2 years, that is 2022 and 23, to receive certificate from the Honorable Chancellor. Senior most learner female Chandra Prabha Mahanto passed BA in 2023. Chandra Prabha Mahanto. Then senior most learner male who passed MA Assamese in 2023, Mohendra Bhuya. Chandra Prabha Mahanto. Mohendra Bhuya, who has passed MA in Assamese in 2023. Now, the university would like to award certificate to the successful learner of Krishnakanto Hendik State Open University study centers, which are located in jails across the state. I would like to invite the candidate to come up to the dais and receive his certificate from the Honorable Chancellor of the University. Dudul Das, Central Jail, Guwahati. He has passed the BA. Dudul Das from Central Jail, Guwahati Center, who has passed the BA General. Thank you, sir. Thank you so much. Today, we are privileged to have amongst us Professor Sushma Yadav, an accomplished academician and visionary leader, as a chief guest for today's event. Professor Yadav currently serving as the Pro Vice Chancellor of the Central University of Haryana, Mahendragarh, Haryana. She has served as a member of Justice K.G. Balakrishnan Commission in New Delhi, further contributing to academia as a member of the University Grants Commission. Her illustrious career spans several esteemed positions, including Vice Chancellor of Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya in Sonepat and Pro Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University in New Delhi. Professor Yadav's expertise in public policy and governance is evident through her tenure as a professor at the Indian Institute of Public Administration, where she also chaired the Dr. B.R. Ambedkar Chair. A topper of Delhi University, Professor Sushma Yadav has published more than 15 books and several research papers in national and international journals. Throughout her career, she has held significant leadership roles, such as chairperson of the governing body at the College of Vocational Studies, University of Delhi, and president of the Indian Political Science Association. Professor Yadav has been instrumental in shaping academic policies and activities
serving on various committees and councils of esteemed institutions like Delhi University, Jawaharlal Nehru University, and Indira Gandhi National Open University, among others. Her contributions to academia and society have been recognized with numerous awards, including the Savitribai Phule Rashtriya Shiksha Samman 2023 and the Women Empowerment Award 2023. Professor Yadav influence extends beyond borders as she has represented India in academic and administrative capacities during visits to several countries across the globe, including China, the USA, and Germany. We welcome you, ma'am. May I now invite our Vice Chancellor to request Honorable Chancellor to invite the Chief Guest to present the convocation address. I would like to request Honorable Chancellor to invite the Chief Guest to deliver the convocation address. It is my pleasure to invite Professor Sushma Yadav, Chief Guest of this 6th convocation of KKHSOU State Open University, to deliver the convocation address. Honorable Chancellor of Krishnakanta Handik State Open University and Honorable Governor of Assam, respected Shri Gulabchand Kataria ji, Honorable Vice Chancellor of the University and my younger brother, Professor Rajendra Prasad Das ji, all other invited Honorable Vice Chancellors from different universities around, esteemed members of Board of Management and Academic Council of the University, Registrar, Deans, Directors of Schools, faculty members, officers, and staff of the universities, graduating students, doctors, masters, bachelors, their proud parents, winners of medals and awards and certificates, invited guests, members from the media, ladies and gentlemen, sabko namaskar. It's a great pleasure for me to be here to deliver this convocation address, which is the 6th convocation of the university. Before I start, I would like to offer my salutation. सर्वप्रथम मैं भारत माता को नमन करती हूँ, इस आसाम की धरती को नमन करती हूँ, प्रोफेसर कृष्णकांत हांडीक जी की पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ, इस देश की यशस्वी लोकप्रिय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रणाम करती हूँ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करती हूँ, इस प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी को नमस्कार करती हूँ और प्रदेश के विचारशील दूरदृष्टि रखने वाले कुलाधिपति जो हमारे बीच हैं, ऐसे आदरणीय श्री गुलाबचंद कटारिया जी को भी प्रणाम करती हूँ। इस विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और फिर आप सबको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ। Congratulations, dear graduating students. It's a great occasion for you. It comes very rarely, once in lifetime, when you become bachelor, you become master, you become doctors. Of course, many of you may repeat it. You may do another bachelor's degree. You may do another master's degree. You may even do postdoctoral or another doctorate degree. But still, it comes once. And your pleasure and your parents' pleasure is equally great even at that time. I also wish to congratulate 2 senior citizens who have done their graduation or degrees this time. Look at their desire to learn and desire to earn a degree, because you can learn without a degree also.
but the desire to earn a degree which must be contagious. We can all be inspired that we can learn at any age, and that's something which we must learn. This is the 6th convocation. I would like to congratulate the university, its Honorable Vice Chancellor, its very, very illustrious Honorable Chancellor, and all the faculty members who have made this possible. And I feel honored to be invited to this convocation. My warm greetings to all of you, and my thanks to Honorable Chancellor for giving the approval that I deliver the convocation address. I have noted just now that the university was established in 2005. It's a baby university if we look at the institution's age, because institutions have very, very long existence. So it's not even 25. In a person's age, we say one gets young at that time. But I say it, baby, and you have years and years to grow and attain. I wish the university all the very best to grow in name, in fame, in esteem over the years. I am very happy to note that the university has started offering UG and PG programs in accordance with the requirements of National Education Policy 2020 from the academic session 23 and 24. And they're also offering several MOOCs programs on the SWAM platform, because that's one special role that the open universities have. And we do not have enough open universities because all the states are not fortunate to have a state open university. Your state is fortunate, and therefore you are also fortunate that you could have these degrees at your own pace, at your own ease, at your own place, and at whatever age that you offer to have or wanted to have these degrees. I wish to appreciate this and the fact which Honorable Vice Chancellor mentioned in his address, that 50% of the learners are from the marginalized sections and 40% or even more than that are females, which is, I think, a matter of claim. You can all be proud of this fact. India is changing. जिसे हम कहते हैं भारत बदल रहा है, भारत विकसित भी हो रहा है, और इसीलिए जो महिला पुरुष के बीच का अंतर था डिग्रीज लेने में या शिक्षा प्राप्त करने में, दीक्षित होने में, वह भी समाप्त हो रहा है. And to expand the horizon of this university, the university has entered into MOUs. I can name many academic institutions like Uttarakhand Open University, Vardhaman Mahavir Open University, Kota, ICFI University, Tripura, Tamil Nadu Open University. So from east to west and north to south, you have institutions where you have collaborated, and these collaborations always enrich any institution. I again congratulate the Krishnakant Handig Open University for this. They are important in the growth of an institution. I also note that the university has adopted some best practices to impart quality education to its students. You will be the evidences or witnesses to this. The university has adopted learners mentoring system, learning management system, employee profile management system, circular management system, home assignment portal management system, besides many others. I'm sure it must have facilitated your access and the university's availability and accessibility to you. No wonder that the university was awarded a prize, international award in 2013 by the International Organization Commonwealth of Learning as Excellence in Institutional Achievement Award. I wish you many more awards in the years to come, and you have laurels. As I said before, convocation is a very important event for an institution also. It's an important event in an individual's life, but also an institutional's life. And in this
convocation, it's remarkable that 10,854 students are being awarded with their degrees, diplomas, and certificates, out of which 28, which we just saw, received the gold medal. My heartiest congratulations to all of you for winning these laurels, the medals, certificates, degree, and doctorates. Not only to you, your parents, your teachers, your mentors, your counselors, and even your friends, because they must have facilitated your learning and earning of these degrees. You can clap for yourselves. It's also an occasion where your hard work is certified, your hard work is rewarded. But never forget, you get this degree, diploma, or certificate with the support of your family members. Every degree costs the family in terms of either contribution to your hard work, facilitating it, or in terms of material, which means fees also, which means support also, which means books and reading materials and travel, etc. So their support has also facilitated your earning. I really wish to congratulate the family members of all these students who have won medals, who have won degrees. And your siblings also, because they must also have facilitated you in this award. The opportunity to pursue higher education in this country, and I would say most of the world, is still very limited. We are trying to increase the gross enrollment ratio, but it hasn't crossed 25% yet, or maybe 30%. So you are among those lucky ones, very fortunate ones, the 25% elite of this country who've been able to come to a higher education institution. Congratulations once again. This is also the time the degree which you have taken has empowered you. You are a degree holder. Now you are ready to embark upon a new life, a life to realize your dreams, dreams which you nurtured for years and years, maybe. But please now work with determination. सपने हम सब देखते हैं और सपने देखकर हम सबको अधिकार भी है, लेकिन सपने हम देखते हैं पर पूरे उन्हें कब कर पाते हैं? सपने तो हम बिना मेहनत की नींद में देख लेते हैं, सपने तो हम बिना मेहनत की नींद में देख लेते हैं, लेकिन लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत सी नींद गंवाकर मेहनत करनी पड़ती है. I really wish that you are ready to work that hard so that you can realize your dreams and attain your ends or aims that you have decided for sure. And I'm very sure that with your dreams and ideas, you will chart out your distinctive path and identity in the professional world and the global world which is before us. Open learning has made this possible, so it has revolutionized education by breaking down barriers, barriers of entering an institution, barriers of age, barriers of time, barriers of space, barriers of resources, barriers of positions. It has broken these barriers and provides access to knowledge for individuals from all walks of life, and it is a platform which embraces diversity and flexibility. The NEP 2020 takes it to a richer direction and greater heights, because now it makes possible that you break the barriers of disciplines also. If you took science at one time and then you want to enter arts, it was still possible before. But if you had opted for arts, you wouldn't have been able to get into sciences ever in your life. NEP 2020 would make it possible now that if by chance you could not go to a scientific discipline or discipline of science at the time of your entry into the college, you may have options and opportunities to change your discipline if you have the scientific bent of mind,
if you have an interest, if you have a flair, you will be still able to change your discipline. That's a great change coming for this generation. I really compliment you. We couldn't have done it, but you will be able to do it. That is the miracle of NEP 2020, and I wish it gets realized soon enough. The university spirit is education beyond barriers. And these barriers, which were there before, are now being, of course, broken. We must remember India, that is Bharat, is one of the most ancient civilizations. And as most ancient civilization of the world, the knowledge traditions of India also have passed through various phases, the oral phase and then the written phase. Multiple disciplines with diverse subject matters can be seen in the Indian traditions or Indic traditions of knowledge. And these disciplines, when accumulated and put together, make Indian Gyan Parampara or Indian knowledge tradition, as we call it, or Indian knowledge system, as NEP 2020 mentions it. I'm very hopeful, rather sure, that Krishnakant Handik Open University, under the such able leadership of the Honorable Vice Chancellor and the overall philosophical guidance from Honorable Chancellor, will be able to inculcate the Indian knowledge system into the students and would be able to intricately weave it into your syllabus and various curriculum frameworks. It is the demand of the time. It is only in the Indian knowledge tradition that we find that there are 14 Vidyas and 64 Kalas. The Vidyas are theoretical parts of the knowledge tradition, and the Kalas are the various skill-based art forms or art-based practices that one can really excel in. And many of you must be having so many of these skills which now can be woven into your degrees and also be certified by institutions like the State Open University that we have here or other traditional universities, who will also become part of the expanding Indian knowledge tradition. They are not only a spiritual tradition, but a knowledge system which provides you understanding of the various ways of life. When you go into the world, you must be known by your behavior. In Sanskrit, there is a text which says, Yesham na vidya, na tapo na danam, na jnanam na shilam, na guno na dharmam, te mrityu loke bhuvi bhara bhuta, manushya rupen mrigascharanti. Some of you may have understood this. But those who do not have education, who do not have sacrifice, who do not have charity, who do not have knowledge, who do not have wisdom and humility, who do not have qualities, who do not have dharma, they are not even humans. They are just like animals who go around in the nature. We have grown up now. We don't say animals are lesser beings, but surely by acquiring all these qualities, we become better human beings. I wish all of you, when you behave in the world, you are able to demonstrate these qualities so that your education really becomes meaningful. You also have a tough time because you are now going to live in a world which is called VUCA world, which they say, I don't agree with that though, because every world is a VUCA world, because world changes always, and the world remains uncertain because we don't know the future. But for you it's difficult because you have passed through that phase of Indian society when we had a nuclear family emerging much more. जो एकल परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, वहाँ माता पिता और बच्चे, माता पिता दोनों कमाने की कोशिश करते हैं और बच्चा प्रायः या तो अकेला होता है, अपने आप फेंड करता है, या किसी के साथ हाथों में पलता है. तो बहुत सारे वो गुण जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आई एम श्योर यू ऑल नो देम,
उनसे हम जो सीखते थे वो भी अब आपको अपने आप सीखना है या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीखना है। इसलिए आपका काम और कठिन है, but I am sure you are even more intelligent. You also have more exposure, so you will be able to learn it. But I also wish that with years you develop in yourself that patience and that tolerance and that large-heartedness which is required to live together. Because you not only have to live together in India, Bharat, but you also have to live and coexist with the world. Because now we say it's a global world. And NEP 2020 says that you must be ready for becoming the citizen of a globalized world or a global society. So have these. I have also noted that the university has expanded over the years and it has 5 lakh learners, which is a very huge number. So you have 5 lakh siblings, in fact, with you. They are the alumni, they are part of your family, and these alumni basically come together to support each other. Have that feeling and remain always attached with your institution. And the university has now, again in this session, 41,726 admissions, which is, I think, very huge number for any educational institution. Speaking of the transformative vision of NEP 2020, it ushers into an era of holistic education. Holistic education where all the disciplines will come together and all the co-curricular, I won't say extracurricular, but co-curricular disciplines, activities, art forms also will come together and make you a very accomplished human being. I wish that soon comes and your education goes beyond the classrooms. So the synergy between NEP 2020 and the synergy between open learning, they really are striking and remarkable because both recognize the very, very significant role of technology in education, openness in education, liberal perspectives, and integrating learning and teaching processes together. This not only enhances accessibility, but also aligns education with the demands of the changing times. The policy's global perspective, as I just said, seeking to establish Bharat as a hub for education or making Bharat as a Vishwaguru also aligns together, and they both have very, very important role. Sorry. Usually we believe that by education we become ready to earn in life. But mind it, dear students, in Indian tradition, knowledge is not merely that. It's also to bring you laurels in life. It is said, Vidya Arthakari, it gives you employment. Vidya Yashakari, वह यश भी देने वाली है, it's to give you real fame and name. And finally, it's also to move you towards making India a 5 trillion economy, which is soon going to be a reality, for taking bold steps into this direction. And for that, you have to take care of your health through the Panchakoshiya Vikas, which Indian tradition again has, where your body is healthy, एक स्वस्थ तन हो, एक बड़ा संयमित मन हो, एक बहुत संतुलित प्राण हो, एक समुचित विज्ञान हो, और उसके बाद असली आनंद जिसको हम सत्यचित आनंद कहते हैं वो लेने के लिए आप तैयार हों। वो तब आप हो पाएंगे जब आप जीवन के क्रमों को भी समझेंगे। एक और श्लोक अपने स्क्रिप्चर का आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं अंत करूंगी। विद्या ददाति विनयम। If you are educated, you must learn humility. You must be humble in life. You must understand how to behave with others. Vidya dadati vinayam, vinayati yati patratvam.
Patratvat dhanam apnoti. So when you adopt humility, you also become able or capable. You have the capability and ability to move forward in life. Patratvat dhanam apnoti. And you earn when you become really capable and qualified for earning. And dhanat dharmah tatah sukham. The sukh comes in the end. When you start earning, then you indulge in the righteous behavior and righteous way, whatever is expected of you in the time to come. And after that, you are really qualified to have pleasure or have the sukh that human being really look for, the comfort, the luxuries, or the pleasure, as we say it. But there is a complete sequence of getting these qualities. I hope and wish you will remember them and you will show them in life. Nothing can be better than this, and nothing can be greater than this. I really wish you are able to attain all this. In our scriptures, there is a very beautiful sentence as a convocation address. I would just remind you that. In our scriptures, the convocation address is, the teacher says to her students, Satyam vad, always speak the truth. Dharmam char, always indulge in righteous practices or behavior. Follow the dharma. Swadhyayat na pramad, and never leave self-study. So now we say lifelong learning, but our tradition had emphasized it before. I will charge you what Honorable Chancellor was charging you all through, that I charge you that you prove yourself worthy of this education. So I charge you. These are very simple 3 sentences, but just see the deep meanings of this. Because if you speak the truth, you have to live that life. If you have to follow the righteous path, again, you have to live that kind of life. And if everyone lives that life, the world really will be a beautiful place to live. I wish that you are harbingers of such a world where learning is also there, dharma is also there, and truth is also there, and knowledge always wins finally. So in conclusion, I would once again like to congratulate all the graduating students who are here today. Let us acknowledge the profound impact of learning on you and the forward-looking vision which is embedded in NEP 2020. I would wish that the university also formulates its institutional development plan soon and follows that. I extend my heartfelt congratulations to your family members also and your teachers as well. And I would like to thank once again Honorable Chancellor Shri Gulabchand Kataria ji for making it possible that I deliver this convocation address, and my very dear brother and Honorable Vice Chancellor of this university, Professor Rajendra Prasad ji, for inviting me to be part of this inspiring convocation ceremony. I hope you all go inspired and you all lead a wonderful, successful life. एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन, आप सबको बधाई, आप सबको साधुवाद, आप सबको आशीर्वाद also. नमस्कार, जय भारत, जय आसाम. Thank you, Madam, for your highly enlightening deliberation. May I invite the Vice Chancellor to request the Honorable Chancellor to deliver his address. May I request Honorable Chancellor to kindly deliver his address.
नमस्कार। कृष्णकांत हैंड्रिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के इस छठे दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान आज का जिनका दीक्षांत भाषण एक बहुत ही शिक्षक के रूप में जो कुछ उन्होंने कहा, मैं प्रोफेसर सुषमा यादव जी का हमारे यहाँ आने पर और ये व्याख्यान देने पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद दास जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सभी अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, रजिस्ट्रार, डीन, निदेशक, संकाय सदस्य, सभी इस विश्वविद्यालय के मेरे साथी बंधुओं, और आज जिन्हें दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्रदान की गई है, वो सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, उन सभी भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, शिक्षा से प्रेम रखने वाले सभी बंधु जो यहाँ विराजमान हैं, वास्तव में मैं विश्वविद्यालय का और आप सभी का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपके बीच में इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं सोचता हूँ कि दीक्षांत समारोह जिंदगी का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आज के दिन जिन बच्चों को हमने गोल्ड मेडल दिया या जिन्होंने पीएचडी या जिन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की, उन सबको यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। बाकी सब लोगों को भी आज हमने इस दीक्षांत समारोह में उनकी उपलब्धियों की एक तरह से सर्टिफिकेट उनको दिया है। मैं सोचता हूँ कि ये वास्तव में सबसे बड़ा त्यौहार इसलिए है कि ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, और विशेष करके खुले विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर है, जो शिक्षा से किसी कारण से रेगुलर कॉलेज से अपने आप को जोड़ नहीं पाए, उन्होंने अपने आप को जोड़ा और जोड़ करके उनके बराबर अपने आप को खड़ा करने का जो इन्होंने प्रयत्न और परिश्रम किया, उसके लिए आप सब बच्चों को, बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ आपके परिवार को, सामान्यतः क्या होता है कि जब एक बार कॉलेज छूट जाता है तो फिर से उसमें शिक्षा से जोड़ना बहुत कठिन काम होता है, और इसमें बिना परिवार के सहयोग से कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ कि आपके परिवार के सभी अभिभावकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपको इस खुले विश्वविद्यालय के द्वारा अपनी पढ़ाई को और अच्छे ढंग से करने के लिए अवसर प्रदान किया, उनका धन्यवाद। और सच में इसको तराशने का काम जिन शिक्षकों ने किया, क्योंकि रेगुलर क्लास से दूर रह कर के भी इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करना, ये बिना शिक्षक के सहयोग से और बिना उसके गाइडेंस के कभी संभव नहीं हो सकता। इसके लिए मैं उन गुरुजनों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय का नाम जिसने भी रखा, मैं उसका बहुत अभिनंदन करता हूँ। कृष्णकांत हैंड्रिक एक ऐसे विद्वान पुरुष थे, हमने विश्वविद्यालयों का नाम महापुरुषों के नाम से सुना है, नेताओं के नाम से सुना है, लेकिन एक समर्पित शिक्षक के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम होना अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय है, जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ। वास्तव में आपने उस शिक्षक का सम्मान किया है जिसने संस्कृत के एक अच्छे विद्वान के रूप में देश और दुनिया में अपना नाम कमाया। साथ ही उन्होंने 20वीं शताब्दी, जब सामान्यतः शिक्षा से जो वंचित हो जाते थे,
उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं होता था। उन्होंने केवल अपनी विद्वता का उपयोग अपने लिए नहीं किया, तो अपनी विद्वता के आधार पर वंचित जो बच्चे रह गए हैं, शिक्षा से दूर हैं, गरीबी के कारण से है या अपनी व्यस्तता के कारण से जो छूट जाते थे, उनको भी उस समय में भी वो गाइड करके उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयत्न करते थे। आज सच में ऐसे एक महान गुरु को, जिसने अपने आप को सारा जीवन शिक्षा को समर्पित किया, वो कृष्णकांत हंडिक जी को मैं बहुत नमन करता हूँ और इस विश्वविद्यालय का नाम जिन्होंने रखा उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अगर ये दिशा इसी और आगे बढ़े तो निश्चित रूप से शिक्षा का क्षेत्र अपने आप में बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा। जब हम श्रेष्ठ व्यक्ति और श्रेष्ठ गुरुओं का, उनके नाम को अमर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीखेगी कि वास्तव में शिक्षा को समर्पित व्यक्तियों का मान और सम्मान शिक्षा क्षेत्र अगर नहीं करेगा तो और कौन करेगा। इसका मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सामान्यतः यह जो खुला विश्वविद्यालय है, ये उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा से अपने आप को थोड़ा दूर हटा दें, उनको फिर से शिक्षा में जोड़कर। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 75 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने जिस प्रकार की उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने आपको और हमको भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि आप लोग भी कुछ कर सकते हो, अगर करना चाहो तो उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ आप। बहुत ही सुखद अनुभव हुआ मुझे। मैं सोचता हूँ कि इस विश्वविद्यालय ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में इस नॉर्थ ईस्ट में यह पहला खुला विश्वविद्यालय है। सारे देश में 14 ही विश्वविद्यालय हैं, उसमें से एक आपके यहाँ है। और आपने इस कम समय में जिस प्रकार से बच्चों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, जैसा आपने कहा कि लगभग 50,000 बच्चों को हमने इसमें एनरोलमेंट किया है, 10,000 से अधिक बच्चों को आपने डिग्रियां दी है। वास्तव में ये आपकी उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मैं सोचता हूं कि नई शिक्षा नीति के तहत एक टारगेट तय किया, जो आपने भी कहा कि 2035 तक हम उच्च शिक्षा से संपूर्ण देश की जनसंख्या के आधार पर जोड़ देंगे 50% लोगों को। तो मैं सोचता हूं इस लक्ष्य में अभी अपन बहुत दूर है। अभी तो संपूर्ण देश केवल 28% पे पहुंचा है और उसमें भी लड़कियों की शिक्षा की दृष्टि से जो परसेंटेज चाहिए वो अभी भी काफ़ी दूर है। लेकिन आपको बधाई कि आज वास्तव में आपने 53%, 53% बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन से जोड़ करके उनको जो डिग्रियां दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने एक तरह से जिस प्रकार का, और टोटल जो भी आप स्टूडेंट आपने जिनको डिग्रियां दी हो, वो भी 49% उनमें बच्चियां हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आज आपने और सबने हमने देखा, हम सब रोज ही देखते हैं कि अधिकांश गोल्ड मेडल और PhD बच्चियां ले रही है हिंदुस्तान में, केवल इस विश्वविद्यालय में। इसका मतलब उनका पास टैलेंट है। उस टैलेंट का उपयोग जितने भी करने का प्रयास किया, उसने वास्तव में इनकी शक्ति को पहचान करके आगे बढ़ाया। आज देश का नेतृत्व एक राष्ट्रपति के रूप में एक महिला कर रही है। इसका मतलब यह है कि क्षमता तो है, अवसर का अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से फौज में भी वो सीमा पर सीना तान के खड़ी है देश की रक्षा के लिए। तो आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी हमारे महिला वैज्ञानिकों ने भी अपना करिश्मा दिखाया है। इसका मतलब क्षमता है। और दूरस्थ एजुकेशन की सबसे ज़्यादा जरूरत अगर किसी को है तो वो महिलाओं को है। इसमें हम और प्रयत्न करें, जिसके कारण से कोई भी बच्ची जो पहले कभी पढ़ी थी और अपने पारिवारिक जीवन के कारण से, उसके वजन के कारण से उसने पढ़ाई छोड़ दी है, उन सब बच्चियों को हम वापस कैसे जोड़ें हमारे इस खुले विश्वविद्यालय के माध्यम से। ये आपका और मेरा काम करने का एक टारगेट होना चाहिए। सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके कलेक्टर हैं, उनको आप बताइए
कि हर गांव में हर जगह जो बच्ची कभी पढ़ी थी, आज वो 20 साल से 15 साल से एजुकेशन से अलग हो गई है, उसे फिर से कैसे जोड़ा जाए और वो कैसे हमारे खुले विश्वविद्यालय का लाभ उठाएं, इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, ताकि जब आपकी संख्या खुले विश्वविद्यालय की 70 से 80% बच्चों की एजुकेशन होगी, तब हमें समझ में आएगा कि खुला विश्वविद्यालय का जो मंतव्य था वो हमने अब पूरा करने का प्रयत्न किया है। उसके लिए मैं आप सबके निवेदन करना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि खुले विश्वविद्यालय में चुनौतियां भी बहुत, वो चुनौतियां है कि पाठ्यक्रम कैसा बना, पाठ्यक्रम जो बना है वो इन बच्चों के लिए कितना उपयोगी है, उसका हर 2-3 वर्ष में मूल्यांकन होना चाहिए कि वास्तव में जो पाठ्यक्रम हमने बनाया वो आज की आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है कि नहीं। जैसे जैसे समय बदलता है पाठ्यक्रम की उपयोगिता भी बदलती जाती है। बाकी जगह तो वो अपने आप करते हैं, लेकिन ये हमारे दूर दराज में बैठे हुए बच्चे जब हमारे इस पाठ्यक्रम के आधार पर जुड़ते हैं, और अब मैं सोचता हूँ कि जो ऑनलाइन पढ़ने की प्रवृत्ति है केवल आपके यहाँ नहीं, बाकी विश्वविद्यालयों ने जब शुरू की है, तो निश्चित रूप से आपके जो पाठ्यक्रम की तैयारी होती है, जो लेसन बच्चों को जाता है, जो रिप्लाई उसका आता है, उसको ठीक समय पे करेक्शन करके अगर इन बच्चों को आप उनको गाइड करेंगे, तो मैं सोचता हूँ इनकी उपलब्धि बहुत अधिक आगे पहुँचेगी, और उसके लिए हमें विशेष रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो आपके पास जो टीचर उपलब्ध है, कोई ज़रूरी नहीं है वो सब आपके कैंपस में हो। अगर इस देश में भी कहीं अच्छा टीचर है, उसके लेसन को तैयार करके ऑनलाइन उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, उसका टाइम टेबल तय करके सप्ताह भर के टाइम टेबल में इस दिन इसकी क्लास होगी, ये व्यक्ति उस क्लास को लेगा, आप इससे ऑनलाइन से जुड़िए और जुड़ करके अपने इस सब्जेक्ट को परफेक्ट करिए, तब जाकर के हम वास्तव में जो हमारी शिक्षा से छूट गए हैं उनको हम अच्छी शिक्षा से जोड़ने में सफल हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ इस और हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। वैसे तो आज जिनका मुख्य वक्ता के रूप में भाषण हुआ, उन्होंने क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने शिक्षा में गुजारी, इसलिए उनका अनुभव है ही है। हमने तो केवल हाथ लगाया और छूट गए। तो अभी हम जिस एरिया में चले गए वो बिल्कुल अलग ही प्रकार का एरिया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर शिक्षा अपने अतीत से नहीं जोड़ सकी, अपने महापुरुषों से नहीं जोड़ सकी, अपने देश की विशेषताओं से नहीं जोड़ सकी, देश की चुनौतियों से नहीं जोड़ सकी, वो शिक्षा नहीं है। मैं सोचता हूँ आज ये चुनौती है, और शिक्षा कभी एक डिग्री प्राप्त करने तक नहीं रहती है। शिक्षा जीवन पर्यंत मरते तब तक चलती है। इसको कैसे डाला जाए और कैसे इसको इस प्रभावी रूप से बनाया जाए, इसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूँ हमारे बच्चे हमारे अतीत से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े, अपने मित्रों से जुड़े और अपने शिक्षकों से जुड़े जिन्होंने हमें इंसान बनाया। इस बात का ध्यान रख करके अगर वो अपने जीवन को आगे चलाएगा तो निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी सुखद हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि आपने देखा होगा कि आज की तारीख में अब हमने ये 75 वर्ष की यात्रा पूरी कर दी। अगर हमें शिक्षक जो है ना वो नैतिक मूल्यों से जोड़ देती शिक्षा, तो आज और हमारा देश और बहुत आगे होता। हमारी इस कमी को हम महसूस करते हैं। अब ये जो दूरस्थ शिक्षा से जुड़ने वाले बच्चे हैं, इनमें नैतिक गुणों का विकास कैसे हो, ये कैसे अपने आप केवल और केवल डिग्री प्राप्त करना से कोई अर्थ नहीं निकलता है। देश के लिए मूल्यवान बालक अगर हमें चाहिए, मूल्यवान इंसान जब चाहिए, तो उसकी खुराक भी हमारे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इसको जोड़ना चाहिए, ताकि वो इसको अच्छी प्रकार से सुने। अब जैसे आपने कहा था कि कुछ गुण ऐसे हैं, सच्चाई, अभी सच्चाई कहने के लिए सच्चाई शब्द लिखा रहता है, लेकिन व्यवहार में सच्चाई रहती कि नहीं रहती है, इसके बारे में विचार करना हम हर बच्चे का एक तरह से धर्म बनता है कर रहे हैं। अभी हम कहते हैं कि भाई हमारे में ईमानदारी आनी चाहिए। अगर ईमानदारी आ जाए तो देश आसमान छू सकता है। आज भी देश में इतनी ताकत है, लेकिन इसके लिए भी निरंतर हथौड़ी से ठोकता रहना पड़ता है कि व्यक्ति कब फिसल जाए कोई ठिकाना नहीं। आज हम अच्छे हैं, कल अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसको निरंतर हैमरिंग चाहिए कि हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए।
मैं सोचता हूँ ये निष्पक्षता का शब्द हम रोज अपनी जब शपथ लेते हैं तब ये शब्द बोलते हैं, पर हम कितना रहते हैं ये ईश्वर जानता है या अपन स्वयं जानते हैं। तो वास्तव में इस दर्द को महसूस होना चाहिए हमारे बच्चे को कि जब निष्पक्षता का शब्द कहा है तो ये हमारी रग रग के अंदर, हमारी खून की हर बूंद में कैसे आए, चाहे वो कैसा भी मेरा शत्रु होगा, लेकिन जब मुझे कुछ निर्णय करना होगा तो निष्पक्ष होकर के निर्णय करूंगा, तब लगेगा कि मैंने अपनी शिक्षा का सही अर्थ से शिक्षा को मैंने समझने का प्रयास किया है। और मैं सोचता हूं कि आज ये जो दूरस्थ शिक्षा को ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से देश को जिस ओर लाने का प्रयत्न हो रहा है उसको भी समझना चाहिए कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ शक्ति बन सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं 2047 जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब हम दुनिया के नंबर 1 पे विकसित राष्ट्र के रूप में खड़े होंगे। इसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। आज हम 5वीं शक्ति जरूर बन गए और बहुत जल्दी एक आध साल में हम 30वीं तक पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन उसमें इन सब का उपयोग है केवल अकेले प्रधानमंत्री जी और हम कुछ लोग ही करेंगे ऐसा नहीं है। ये सब लोग मिलकर के इस टारगेट को अचीव करने का प्रयत्न करें, ये भी इनको शिक्षा के साथ एहसास होना चाहिए। और हम पढ़ लिख गए, हम इतने योग्य बन गए, और अगर हम समाज और देश के लिए उपयोग नहीं है तो आपका कोई मूल्य नहीं है। अगर आप समाज और देश के लिए उपयोगी नहीं हो तो केवल और केवल अपने बच्चे और परिवार पालना, ये शिक्षा का अर्थ नहीं था। मैं सोचता शिक्षा का अर्थ तो समाज और देश को ऊपर उठाना होता है, और उसको उठाने के लिए हमें निरंतर अपने दिमाग को भी चलाना पड़ता है और सोचना पड़ता है इस दिशा में। जिस समाज ने आपको और मुझे पढ़ाकर इस योग्य बनाकर इस कुर्सी पर लाके बिठाया है, उस समाज का ऋण है हमारे पर। उस ऋण को अदा करना हमारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं है। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोग इस बारे में विचार करें, और विचार कर करें योग्यता, अधिक से अधिक योग्यता अर्जित करें, अधिक से अधिक धन अर्जित करें, लेकिन उस सब का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में हम कैसे कर सकते हैं, इस पर विशेष रूप से अपना ध्यान जाना चाहिए। मैं एक बार कुलपति महोदय आपको और आपके सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स और कलीग्स हैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने कम समय में, और विशेष करके यहाँ की सरकार को, कि उन्होंने आपको सहायता करने के लिए अभी 20 करोड़ रुपया जो जारी किया है, मैं सोचता हूँ पैसे की दृष्टि से कमी नहीं आएगी। मैंने यही ऐसा देखा आसाम में कि विश्वविद्यालय खुलता भी है और खुलने के साथ उसका 50 करोड़ रुपया बुक भी कर देते हैं। मैं भी राजस्थान में लंबे समय तक शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ और कई पदों पे रहा हूँ, पर हम खोल देते हैं, उसको सहायता देना भूल जाते हैं तो यूनिवर्सिटी लड़खड़ा जाती है। मैं सोचता हूँ जिस पर्पस को हमको पूरा करना है उसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी मन है पूरा, और हम आज भी अपने आसाम को इस शिक्षा की दृष्टि से बहुत ऊंचे पायदान पे ले जा सकते हैं। ये हमारे पास क्षमता है, हमारे पास योग्यता है। मैं आप सब बच्चों से भी जिन्होंने आज डिग्री प्राप्त की है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और चाहता हूँ कि आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि का उपयोग समाज और देश के लिए हो। इतनी प्रार्थना करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sparing your very precious time in our midst today and endowing us with your words of wisdom. May I now request the registrar to present the convocation register to the Honorable Chancellor for his signature. I would also like to request the Controller of Examinations of our university to accompany him. I request the Honorable Chancellor to kindly sign the convocation register, please. Thank you so much. May I invite the registrar to request the Honorable Chancellor to declare the 6th convocation closed. I request the Honorable Chancellor to declare the convocation closed.
I declare the convocation closed. I request everyone to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. With this, we have come to the end of the 6th convocation of Krishnakanta Handikoi State Open University. May I now request all present here to remain standing till the academic procession leaves the convocation hall. Once again, I congratulate all the learners. We all invite you all, our guests, dignitaries and the learners to join us for lunch. Have a wonderful time ahead. And there is an announcement for the learners. I request all the learners to get their certificate from the counters which has been formed in the first floor, just below this auditorium hall. In the first floor, this is the 3rd floor. You have to go to the first floor to take your certificates. And you'll get the lunch box over there only. So kindly request all to proceed there. And there is an alumni meet. Alumni meet ekhon hobo 2:30. So I request all the learners to be present here at 2:30 sharp.